Okay, so let's see that example of switch case. So this is a program which is telling you that you have to take a operators, then based upon the operator it gives you the result. Okay, so let's see the example. तो यहाँ पर हम स्कैनर क्लास यूज करते हैं. Okay, so we're using the scanner class. The scanner class is used for taking the keyboard input. Okay, तो keyboard input करने के लिए आप scanner class use करते हैं. Okay, then scanner is equals to new scanner system.in. As you know that for taking the keyboard input, we're using system.in. The system.in is used for keyboard input. Just like you are using printf and scanf in the C programming language, printf is scanf is used to accept the input. तो similar way यहाँ पर जो कीबोर्ड इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर क्लास यूज कर रहे हैं. तो स्कैनर is equal to new scanner system.in. Then here we define the three variable int, norm1, norm2 and result. Okay, तो we are defining three variable. यहाँ पर मैंने तीन variable define किया और जो variable है वो static होगा. Static means the value is never changes throughout the program execution. मतलब जब तक आपका एक प्रोग्राम रहेगा वैल्यू आपका चेंज नहीं होगा. So that is the work of static, means no duplicate copy is created for that variable. Okay, you cannot create a duplicate copy for it. Next, what happened? It is The value of static variable will remain constant throughout the program execution. Okay. Next, we are defining a function. Function work is what? As in previous class we have discussed, अगर ये जो फंक्शन आप यूज नहीं करोगे तो एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकेंड नंबर, तो आपको सभी केस स्टेटमेंट में ये दोनों स्टेटमेंट आपको बार बार लिखना पड़ेगा. सपोज आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मैंने केस प्लस लिया है, केस माइनस लिया है, केस मल्टीप्लिकेशन लिया है, केस डिवीजन लिया है. ये सब क्या है ना, एक एक ऑपरेटर है. ओके, तो ए ऑपरेटर क्या करेगा ना, अगर आप दो नंबर पास करोगे तो अगर स्टार पास करोगे तो आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करेगा. फिर डिवीजन, ये डिवीजन करेगा. तो जितना भी आपका ऑप्शन है सब ऑप्शन के लिए आपको ये दोनों स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा. तो यू हैव टू राइट दिस टू स्टेटमेंट. तो इफ यू कंपेयर ये जो फोर स्टेटमेंट अगर मैं ये सारा ऑप्शन में लिखूंगा, मतलब ये हो गया कितना स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट हो गया. अभी ये चार स्टेटमेंट में केस वन केस प्लस में दूंगा, केस माइनस में दूंगा, स्टार में दूंगा और डिवीजन में दूंगा. मतलब चार मेरा केस है. ये चार केसेस में अगर मैं चार लाइन लिखता हूँ, देन मुझे आई हैव टू राइट द 16 नंबर ऑफ लाइन. तो मुझे 16 नंबर ऑफ लाइन यहाँ पर लिखना पड़ेगा. तो हियर बाय यूजिंग अ फंक्शन में क्या किया ना, प्रोग्राम को सेपरेट कर दिया. तो वर्क ऑफ फंक्शन इज व्हाट?
इट डिवाइड द प्रोग्राम इनटू ए स्मॉलर पार्ट, एक प्रोग्राम को ए स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट करता है। तो जो चीज आपका रिपीट हो रहा है, ओके, तो मैंने एक ब्लॉक में उसको डाल दिया, तो जिस प्रोग्राम में एक ब्लॉक का जरूरत होगा वो ब्लॉक को कॉल करेगा। जैसे कि क्या हुआ ना, सपोज एक जो आप अगर जाओगे, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, वहां पर क्या है ना, पानी पीने के लिए एक जगह होता है। ओके, तो इसलिए क्या होता है ना, पहले क्या होता था, अगर किसी को पानी पीना होता था तो सब आदमी के लिए, और फॉर द एवरी पीपल यू कैन नॉट प्रोवाइड द डिफरेंट वर्ड पंप सेट और टैप सेट। ओके, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आई हैव टू क्रिएट ए जनरलाइज टैप, तो जहां पर जिसको पीना है बस वही टैप के पास जाओ और पानी पियो। तो एक फंक्शन ऐसा हो गया, मतलब मुझे अगर इनपुट लेना है, इनपुट के लिए अलग सा ब्लॉक मैंने यहाँ पर डाल दिया, एक्सेप्ट स्टेटमेंट में डाल दिया। तो जिसको वही एक्सेप्ट स्टेटमेंट का जरूरत होगा तो उसको कॉल करेगा। मुझे पानी पीना है तो मैं पानी के पास जाऊँ, मुझे खाना खाना है तो आई हैव टू गो टू द रेस्टोरेंट दैट इज प्रेजेंट इन द रेडियो स्टेशन। तो सबका पार्ट यहाँ पर डिफरेंट हो गया। लेकिन अगर मैं ये चीज डिफाइन नहीं करूंगा तो क्या होगा, सपोज मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रेस्टोरेंट में खाना खाना पड़ेगा तभी जाकर मुझे पानी मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है मुझे भूख नहीं लग रहा है, मुझे सिर्फ पानी पीना है, ओके, तो मुझे खाना खाने से पानी मिलेगा। जैसे कि क्या होता है ना, आपका जो ये फंक्शन क्यों यूज किया जाता है, अगेन आई एक्सप्लेन इट। सपोज in a ATM you are having a different option, cash withdrawal, mini statement, okay, balance inquiry, okay, suppose मुझे सिर्फ मिनी स्टेटमेंट देखना है, तो मुझे मिनी स्टेटमेंट देखने के लिए वो बोलेगा आप कुछ पैसा निकालो, उसके बाद मैं मिनी स्टेटमेंट देखूंगा। तो इट इज नॉट पॉसिबल एज अ प्रोग्राम, मतलब आई ओनली वांट द मिनी स्टेटमेंट, बट फॉर गेटिंग द मिनी स्टेटमेंट you require to withdraw the amount, okay, so that what happened, तो मैं क्या किया ना, सब ऑप्शन को डिफरेंट कर दिया, मिनी स्टेटमेंट के अलग, कैश विड्रॉल के लिए अलग, बैलेंस इंक्वायरी के लिए अलग। तो आपको जो चीज चाहिए तो यू हैव टू चूज दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। लाइक इन योर होम आल्सो you are having the different switches for fan, one switch is there, bulb, one switch is there, so which is not required, you have to just switch off it and you have to what use it again another part, okay. The similar way function is break the program or divide the program, I place it in the separate way, okay. तो ए फंक्शन में मैंने क्या डिफाइन किया ना, system dot out dot println, it is asking you enter the first number, then num1 s dot next int, okay, then it is asking you enter the second number, okay, so num2 is equals to x dot next int, I am passing the second value. So next int is what, why it is used, Ankita, here 3 Ankita is present, Ankita Biswal, yes sir, jana nahi understand. just a minute, I is unable to hear you. यहाँ से बढ़ता नहीं जो बड़ा बड़ा है, उल्टा हो गया। Ankita, tell me now. Hello. Why next int is used? Yes sir. Why next int is used? Next int Sagar. jana nahi sir. Next int. Sir, it scans every token as int. Next tokens as int. No. Next Next int is used to convert the string to integer. yes, good. Okay, convert what string to the integer, मतलब any value that you enter in a screen, मैंने आपको समझाया था, जो भी वैल्यू आप स्क्रीन में
एंटर कर रहे हो यूजर से जो डाटा ले रहे हो, सो दैट इज ए स्ट्रिंग डाटा. Now for converting this string data to integer, we're using next int. As you know that in the C program, we're using scanf. So what is the work of that scanf? Scanf is used to accept the input from the user and store in a variable. मतलब यूजर से वो वैल्यू लेगा, वो वेरिएबल में जाकर वैल्यू स्टोर करेगा. दैट इज द वर्क ऑफ scanf. तो सिमिलर वे इन जावा, next int is used to whatever the value the user has given, it will accept it and store in the variable num1. Okay, got it everybody, or any doubt? Yes, sir. The similar way, if you want to take the input of string data, okay, अगर आपको स्ट्रिंग डाटा लेना है तो यहां पर आपको यूज किया जाएगा नेक्स्ट लाइन. ओके, स्ट्रिंग डाटा को लेने के लिए नेक्स्ट लाइन यूज किया जाएगा. सो दैट इज व्हाट, so you can pass here next line. So next line method is used for taking a string data. So I have given a comment line. Okay, so as we are using here, we are taking an integer value, so next int is used. System.out.println, why it is used? For printing the system.out.println is used to print the output on the screen. Okay, anybody in online? Sir, it prints. Yes. Yes, sir. It is like that C out in C++. The way it prints the line, it is used to print the written line in the screen, and because it is written print ln, so we no need to write /n, so that it will enter, means goes to the next line. So ln separates the line. Yes, Ankita. Yes, sir. The output is printed in the same line and the cursor will be हाँ. in the same line. Abhishek, tell me, what is the work of idea only. What is the work of system.out.println? System.out.println, it is used to display the data in a screen. Okay, if you want to display something like in simple way, you are writing a printf. Okay, when you are writing a printf in the C programming language, it is used to display the data. The similar way, system.out.println is used to display the data in a screen. As we are writing ln means it is print the data in a screen and cursor is moving to the next slide. Okay, so after printing the data, suppose it is print the data and it move the cursor to the next slide. So that is the work of your println. If you write only print, it is display the data and cursor will blink in the same line. Cursor मतलब वो यहाँ पर print करेगा और cursor same line में रहेगा. Okay, so that is the work of your word. System.out.println. So it is asking you enter first number, then you accept a number, enter second number, then you accept a number. Then again here we are using a scanner class. So as you know that scanner class is used to taking the runtime input or keyboard input. So we are using scanner class, but object is different. So see that here object is different, here object is different. Okay, the scanner s1 equals to new scanner system.in. Okay, so now what happened, we're creating a object of class as a object oriented program. So if you want to call a function, मतलब object orientation program में अगर आपको कुछ भी function को call करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका object बनाना पड़ेगा. ओके, सो ये हो गया आपका क्लास का ऑब्जेक्ट. स्विच
switch OPE, object is SW, new switch OPE. तो यहाँ पर जो SW है ये हो गया आपका क्लास का ऑब्जेक्ट. यू कैन गिव एनी नेम. ये जो SW का जो है यहाँ पर आप कुछ भी नेम दे सकते हो. इट में क्लास नेम जैसे नेबर भी चलेगा, हम्म क्लास नेम जैसे सेम नहीं होगा तब भी चलेगा, मतलब उसका क्लास नेम का कोई लेना देना नहीं बोलो. नहीं, it is object name, any name. Okay, it is called as the identifier. You can identifying a class. It is representing a class. Okay, it is called as the instance of class. Through that object, मतलब class का object क्यों बनाया जाता है? To access the member of the classes. So who are the member of the classes? One method is there. Variables are there. Okay. Members of the class. Haijan, tell me. Haijan, Yes, sir. Yes, sir. tell me. Who are the member of the class? Hmm. सब पता नहीं सर. क्या 7-8 क्लास हो गया, पता नहीं बोल रहे हो. अभिषेक, Sorry, sir. अभिषेक, Abhishek, are you in line? Yes, sir. Yes, sir. Tell me, who are the member of class? Integer the data type है ये होची. हाँ, INT. INT INT ପାଖରେ ଯୋଉ ଥାଏ ସେଇଟା ବୋଧେ member ହବ. हाँ, select ଯୋଉ one. value ଟା ଆପଣ ନଉଛନ୍ତି. That is what? Member variable. Yes, variable. Then Member variable. ତାପରେ then idea ହଉନି. Ankita Dhal. Yes, sir. Tell me now, who are the member of your classes? Mm, Who are the member of classes? sir, no one. Go for studies, study karo. So I will again back to that part. Who are the member of the classes? So when you define suppose in a object orientation program, class is the main part. So class ऊपर हो गया. नहीं ठीक है ठीक है. It is visible. Class XYZ. Okay. Then who are the member of class? INTA, it is a variable. So you can say variable is a member of class. Then the function that you define, void show, it is a member of class. So what are the thing you define inside a class is called as your member of classes. So anything that you define inside the class, it is called as the member of class. Understood? All. Yes, sir. Yes, sir. Ankita Samal बुझ Ankita, new Ankita. The 3 Ankita is present. Hello, Ankita. Okay.
So now I'll back to the program here. So here I am creating a object of class switch OPE equals to new switch OPE. Then here I define string OP. String is your what? OP is what? Operator. P is a string variable. Tell me again. P is a string variable. Yes. OP is what? String variable. Yes. It is a string variable. OP is a variable. Okay. And data type is a string. Then it is asking you what? It is asking you system dot out dot println enter any character. Okay. So it is asking you enter any character. Okay. So it is display you enter any character like plus, minus, multiplication and division. Then OP is equals to S dot next line. Okay, so OP is what? OP is a string data. So that we are using here next line. तो string value लेने के लिए यहाँ पर हमने next line लिया. Okay, integer के लिए हमने क्या define किया? Next int. Okay. Then we're using here case plus operator. Okay. So case plus means when you enter any character. So it is asking you enter any character. So when you pass plus, then what happened? Throw the object SW. Okay. SW we are calling accept method. Okay. ये जो क्या है ये क्लास का ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा ना एक्सेप्ट मेथड को कॉल करेगा जब एक्सेप्ट मेथड को कॉल करेगा तो आपको क्या दिखाएगा एंटर फर्स्ट नंबर देन यू हैव टू गिव ए नंबर एंटर सेकंड नंबर देन यू हैव टू गिव ए नंबर ओके तो यहाँ पर नंबर मैंने दे दिया देने के बाद क्या होगा फिर वो दोनों नंबर को वो ऐड करेगा यहाँ पर रिजल्ट शो करेगा अगर सिमिलर वे में माइनस देता हूं फिर वो एक्सेप्ट करेगा एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल करेगा और दोनों नंबर को माइनस करेगा यहाँ पर रिजल्ट दिखाएगा तो सिमिलर वे व्हेन आई यूज मल्टीप्लिकेशन then it call the accept method it is multiply the number and it gives the result when I pass the division it is divide the number and shows the result सब में है यहाँ पर है okay then lastly if you are passing any other character मतलब plus minus division multiplication के छोड़कर और कुछ भी सिंबल मैंने यहाँ पर अगर दूंगा तो यहाँ पर आपको शो करेगा क्या इनवैलिड ऑपरेटर ओके so now I run this file if you have any doubt ask me one by one I'll explain you and go for studies so D colon enter Java C then file name dot Java in Java file that is asking you enter any character suppose here I pass here plus when I pass plus then automatically is asking you enter first number 45 enter second number 12 then it is showing you 57 again I execute
enter any character. Suppose I pass here and operator. So again, it is showing you invalid operator immediately. Okay. Any doubt in this program? Ankita? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ଟିକେ ତଳକୁ ଟିକେ କ୍ରସରଟା କରିବେ। See there. ଏକ୍ସଟ୍ରା କଣ ଡିକ୍ଲେୟାର କରି ଜାଣିପାରୁନି ଏକ୍ସଟ୍ରାଟା କଣ କାଲି ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା। କାଲି କାଲି ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ଗୁଡାକ ଏ ଲାଇନ ଗୁଡାକ ଆମେ ଏଇଠି ଡିଫାଇନ କରୁଥିଲେ so we are defining the line where here okay so this four line again we write everywhere clear so when you are writing this four line in every case statement it makes the lengthy of program ओके तो ये जो चार लाइन है इसलिए मैंने क्या किया हर एक केस स्टेटमेंट में नहीं लिखकर मैंने एक जगह पर डिफाइन कर दिया तो जो जिसका कंडीशन सेटिस्फाइड होगा वो ऑटोमेटिक ये फंक्शन को कॉल करेगा क्लियर यस सर। और एनी अदर डाउट इतने बड़ कौन देखो ये करो बुझी है ना नहीं हाँ फैजन समझ में आया अभिषेक हाँ सर समझ में आ गया सर। अभिषेक नहीं है सर। अगर Yes, sir. Yes, sir. Yes. मतलब ये तो हवा भी नहीं लगा था इतना जो ये जो प्रोग्रामिंग जावा का हमारा सेमेस्टर खत्म लेकिन वो तो हवा भी नहीं लगा अभी स्टेज में है ये थोड़ा पहले दिक्कत हुआ प्रैक्टिस भी चल रहा है okay so now I will move to the other part that is your while loop okay, we go for the discussion in every day so that the other doubts are also clear कैसा आ रहा है अब उस तरफ रहेंगे ये सेक्शन okay so now check here we're defining the while loop another looping part while loop now what is that while loop in for loop you know that there is having a three part one is initialization checking condition next is your increment or decrement okay so now in the for loop in while loop while okay then we go forward condition then your statement so till your condition is true the statement within the while loop is executed okay so till your condition is true statement within the while loop is executed then in between your increment or decrement is happen जो भी increment और decrement करना है वो body के अंदर रहेगा so that is the work of your while loop in for loop what happened
all the thing you define in one content. Okay, so all the thing you define in one content in while loop, first you go for a condition till your condition is true. Till your मतलब जब तक आपका condition true रहता है तब तक ये statement आपका execute होगा. Okay. So now I define this program. The syntax of your so while condition, so till your condition is true, the statement within the while loop is executed. Okay, so while condition, so till your condition is true, the statement within the while loop is executed. Now I go for a simple program which is only display from 1 to 10. Here I write the program manually. Class while example then here I define int a, so I want to display from 10 to 20. Okay, so tell me how to write. Ankita, Sagar, participate. Int a is equals to what to write? I want to display from 10 to 20. Suppose A equal to 1. a equals to Sorry, 10. Sorry. Sorry, आज पूरा disturb हो चुका है. 10, then while what condition I have to pass? A less than equal to 20. A less than equals to 20. From
dot out dot println then system dot out dot println system dot out dot println is printing you here a. a plus plus Then a is equals to a